Hello everyone. Welcome back in this lecture about the styling form with the CSS for a professional look. Yesterday's we have studied about the form accessibility, and today we will style our form with the CSS to make them visually appealing and user friendly. Let's transform plain forms into the professional designs. Here demonstrating the basic styling in Flexbox. We will start by the yesterday input buttons and the form container followed by the using Flexbox to align, align elements neatly. Here firstly I will talk about the basic styling for form. What is the meaning of it? Actually, basic styling for forms and inputs improves the usability and provides a clean professional look. Here, first a form container, like I told you before in the intro of it. Here, first a form container. What is the meaning of it? Form container is all about your add the padding and the margin for spacing. Don't worry, I will tell about the padding and the margin also, proper definition of it. Use the background color or border to visually separate the form. I think this clearing now for better. Next one is the input field. Input fields is your style the width, height, padding, and the font for a better readability. Font is like your any font like a sans serif something you can choose, and the VS Code is also provide some fonts. Okay, and add a border with a style focus effects for accessibility. Third one is the label. What is mean of it? Actually third one, what क्या था हमारा third one भाई? थर्ड वन था हमारा इनपुट फील्ड्स, नो लेबल्स. इनपुट फील्ड हमारा सेकंड था एक्चुअली. हम कहाँ थे? हाँ, लेबल्स हम लोग पढ़ रहे तो labels means style labels or clarity and alignment. Okay. And the fourth one is the buttons. Buttons provide a distinct style for us to submit button with the hover effect. Hover effect means your when you click a some button like a submit or register, there is a hover. जैसे कि you can see here hover. Now there is a hover जैसे कि आप देखो hover. होवर ये होवर मीन्स ये क्लिक होता है एक्चुअली होवर जैसे कि ये मेरा होवर बटन जैसे कि यहाँ कुछ मैंने लिखा है तो यहाँ ये मेरा होवर बटन है। होवर मतलब कि हमारा कर्सर एक्चुअली मूव कहाँ हो रहा है तो सिंपल थिंग मीन ऑफ इट होवर। सो फिफ्थ वन इज अ alignment spacing. Alignment spacing use a grid or flexbox for proper layout. Next one is error messages. Style error messages for visibility. Okay. By the combining this style, you create forms that are visually appealing to use and accessible. क्या होता है here add the consistent padding, margin and the fonts. भाई अब इसका मीनिंग क्या होता है हमने एक्चुअली पढ़ लिया है कहाँ कहाँ पे ये है. अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी. Sorry. Padding is the space inside an element between the content and its border. ये मैंने आपको previous lectures में बताया था. What is the meaning of the padding, margin, border, each and everything fully detailed में. You can see my previous video, full explanation of it. Now मैं आपको just simple just brush up कर रही हूँ ये concept. बस okay. इसका पर्पस क्या है? Adds a space around the content to improve the readability and aesthetics.
So key points like that 10 pixel 5 pixel top bottom भी होता है 10 pixel left right 15 pixel मीन्स जैसे कि हमारा लिखा होता है पैडिंग होता है ऐसे जैसे कि हमने यहाँ लिखा है पैडिंग पैडिंग लिखा है 10 पिक्सल 15 पिक्सल सो हियर ये क्या है टॉप और बॉटम पैडिंग और ये क्या है लेफ्ट और राइट पैडिंग ठीक है एंड पैडिंग में जब ये चार चार चीजें होंगी 10 पिक्सल 15 पिक्सल 5 पिक्सल जीरो मतलब क्लॉकवाइज टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ठीक है एंड द मार्जिन इज द स्पेस आउटसाइड एन element separating it from other elements. So what is of its purpose? What is the purpose of it actually? So create distance between elements for proper layout and spacing. So key points of it margin auto means centers the element horizontally with its container. Containers के according वो सेंटर में एलिमेंट एडजस्ट हो जाएगा एंड द नेगेटिव वैल्यू मीन्स your margin is equal to -10 पिक्सल है bring element close together fonts क्या होता है fonts में element means font determine the style size and appearance of text in a document sorry enhances the readability and the conveys the design tone actually so font some common properties of font font family specify the font type like Arial and a sans serif. Font size adjust text size means font size 16 pixel. Font weight जैसे कि यहाँ पे ये रहा 16 pixel. Font size. Okay. Font weight control the thickness of your text like bold and so on. And the font style define the italic or normal text. Italic is a font style italic लिखेंगे normally. And the line height is a adjust spacing between lines. So some of the these things firstly तो एक्चुअली अब लिख लिया कि वन बाय वन की हर एक चीज का मीनिंग क्या है अब जो हमने चीजें पढ़ी हैं उनको जरा हम कंक्लूड कर लेते हैं एक्चुअली है क्या ये ब्रश अप कर लेते हैं मीन्स समरी पैडिंग space inside an element's border one statement में इसकी definition finish हो गई and the margin space outside and the element's border and the fonts define text appearance like size, style, weights, etc. So here you can see very well. Yeah. Input. You can see my cursor. Input style. Input button. Padding क्या 10 pixel. Margin क्या 5 pixel 0. Font size 16 pixel. मैंने आपको बताया 5 pixel 0 pixel का means क्या है ये and customize form border and the background color also so customization form border and the background color enhances the visual appeal and the usability of forms so firstly customizing the form borders define the edges of form elements example are input field button content. You can style the border color, width, style and the radius. Key border properties क्या है border with thickness of the border example 2 pixel border style include solid dash मतलब dotted or non so on border color of the border example hex
हेक्स कलर CCC रेड RGB रेड ग्रीन ब्लू। ये हेक्स क्या होता है एक्चुअली मैं आपको प्रॉपरली बताती हूँ कि हेक्स मीन्स क्या है। हेक्स मीन्स हेक्साडेसिमल कलर। यू कैन सी हियर दिस वन जो है हैशटैग CCCC। तो मीनिंग मतलब कि जो ये है हैश का मीनिंग क्या है ना। हेक्साडेसिमल कलर इज अ स्पेसिफाइड विद हैश हैशटैग एक्चुअली RRGGBB वेयर। अब इसका मीनिंग क्या है। RR मीन्स रेड, GG मीन्स ग्रीन एंड BB मीन्स ब्लू। Hexadecimal integer specify the components of the color. So here hex value कहते हैं hex hex का hex value in a CSS a color can be specified. So CSS means क्या होता है भैया हमने CSS की इतनी सारी ये अभी अभी हमने पढ़ा CSS means और इसकी फर्स्टली फुल फॉर्म क्या होती है। फर्स्टली इसकी फुल फॉर्म क्या है किस चीज को लेकर वर्क करता है ये। तो भाई CSS means your cascading style sheet। ये हमारी CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये है क्या। CSS is a component CSS is a computer language for laying out and structuring web page. This this language contains coding elements and is composed of this cascading style sheet which are called as CSS file. So किस चीज के लिए ये डिफाइन होती है यूज किस चीज के लिए what is the CSS used to define किस चीज के लिए यूज होती है। Sorry. CSS is a style sheet language used to describe the presentation of a document written in the HTML. ठीक है। CSS describe how elements should be rendered on screen, on paper, in speech or on other medium. तो बेसिकली क्या है कि इसको हम CSS से मीन से कलरिंग आएगी हमारी कैसे हम उसको अच्छा बना सकते हैं with colors, fonts and so on. So I think समझ गए कि हेक्साडेसिमल क्या होता है। सो कम बैक ऑन आवर टॉपिक क्या पढ़ देते हैं हाँ कस्टमाइज बॉर्डर। कस्टमाइज बॉर्डर क्या है भाई ये है ना। सो हम पढ़ रहे थे एक्चुअली हाँ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम। बॉर्डर कलर ऑफ द बॉर्डर अभी हमने पढ़ा हेक्स में होता है हेक्स वैल्यू में भी हो सकता है और एंड RGB की फॉर्म में भी हो सकता है वो। RGB में से रेड ग्रीन ब्लू। बॉर्डर रेडियस क्या होता है राउंड द कॉर्नर्स। एग्जाम्पल 10 पिक्सल फॉर कर्व्ड एजेस। So second here customizing the background color. Background colors improve form visibility and create a pleasing design. You can set solid color gradient or even images as the background. ठीक है and key properties of it. Background color क्या है भैया define a solid color. Background image use an image or the gradient. Background size control the size. इनके नेम में एक्चुअली मीनिंग क्या है इनका। बैकग्राउंड पोजीशन इज aligns the background. Okay, so combining these properties then use it properly. Styling from elements and the you can use separately also. Styling from elements input and buttons. So sum up करते हैं चीजों को। बॉर्डर्स क्या होते हैं भाई डिफाइन एजेस विद बॉर्डर कलर बॉर्डर वेट बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर रेडियस ओके एंड द बैकग्राउंड use background color for solid or background for weighted. Combine them to create visually appealing and a user-friendly form. So here you can see form border cat 2 pixel solid hex CCC. Padding 20 pixel background color hex F9 then open here close here. So using the pseudo classes. Pseudo classes क्या है? According to me pseudo classes के बारे में
सूडो क्लासेस यहाँ पे मैं टॉपिक है यूजिंग द सूडो क्लासेस फॉर स्टाइलिंग फॉर्म यू कैन सी हियर। हम इसको यूज करने से पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। सूडो क्लास एक्चुअली है क्या, राइट? So pseudo class is a keyword in the CSS that is added to selectors to style elements based on their state, position, or user interaction without needing to modify the HTML. Pseudo classes allow you to define spatial style for specific states of an element, such as when it is hovered over, focused, selected, or even based on its content. Types of pseudo classes. So user interaction pseudo classes. Style elements based on the user interaction like hovering or the focusing. Hover means when the user hovers over an element. Focus का means क्या है? When the element is focused. Example clicked or keyboard navigation. Active means when an element is actively clicked. Visited style that has been visited. Disabled style elements that are disabled. Checked target checked input checkboxes radio buttons. फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है? फॉर्म वैलिडेशन स्टाइल फॉर्म वैलिडेशन ऑफ सूडो क्लास मतलब कि फॉर्म वैलिडेशन सूडो क्लासेस है पूरा. सो स्टाइल फॉर्म एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर वैलिडेशन स्टेटस. वैलिड स्टाइल्स इनपुट दैट हैव वैलिड डेटा. इनवैलिड में क्या आएगा भाई? ये चीज बाद में देखते हैं अभी. दैट नॉट अ पहले हम देखते हैं कि अब जैसे कि हमने पढ़ तो लिया है कि सूडो क्लासेस होता क्या है ना? तो अब हम देखते हैं होवर पे. अभी मैंने आपको ये सब बताया. अब थोड़ा सा इसके डिटेल में जाते हैं. मीन वन लाइन तो पढ़ना ही चाहिए एक्चुअली. स्टाइल्स एलिमेंट्स ध्यान से सुनना है एक्चुअली. लिसन केयरफुली. कहाँ थे हम? हाँ, होवर पे थे. Styles elements when the user hovers over them with a pointer. Like you can see my pointer या ऐसे hover यहाँ पे hover कर रहे हैं. What हाँ okay. So focus क्या होता है? Style elements when they are focused. Example clicked or navigated using the keyword. जैसे मैंने आपको just one word में बताया था अभी. So disabled में क्या होता है? Styles element that are disabled non-interactive. Checked क्या होता है? Style checkboxes और radio buttons when they are selected. Valid and invalid case styles inputs based on the whether their value meets validation criteria. Advanced classes usage थोड़ा सा advanced है. Required हो गया, optional हो गया, optional style field that are not required. Focus within हो गया, that's fine. So here you can see input focus highlight field on focus. इनपुट फोकस बॉर्डर कलर हेक्स में. आउटलाइन नॉन बैकग्राउंड में हेक्स में. स्टाइल वैलिड इनवैलिड. इनपुट वैलिड बॉर्डर कलर ग्रीन. इनपुट इनवैलिड बॉर्डर कलर इज रेड. सो हियर अलाइनिंग इन द पोजिशनिंग फॉर्म एलिमेंट्स. सो अलाइनिंग क्या होता है? अलाइनिंग फॉर्म एलिमेंट्स ensures a clean, organized and user-friendly layout. Proper alignment enhances readability and usability, making the form visually appealing and easier to interact with. So technique क्या होती है? टेक्निक फॉर aligning form element using the CSS Flexbox. Flexbox क्या होता है? Flexbox is a modern layout tool that provides flexibility. Flexbox में से box को flexibility provide करना. Flexibility in aligning form elements horizontally or vertically. Okay. And using the CSS grid also. CSS grid is ideal for creating structured layout with rows and column.
Third one is using text line for inline alignment. This method is useful for simple form where alignment is a straightforward. Centering form element. Centering the entire form or individual elements can be done using the Flexbox grid or margin. Okay, and you can see here the syntax. Use a Flexbox to create the next layout. Dot form access with dot form group display क्या flex है flex section column margin bottom या 15 pixels. So हाँ हमने जैसे कि अभी हमने पढ़ा था अलाइनिंग के बारे में. अलाइनिंग का तो हमने देखो पढ़ लिया है ना. अब हम पढ़ते हैं एक्चुअली पोजीशनिंग के बारे में. क्या है एक्चुअली क्योंकि यहाँ हमारे दो टर्म्स लिखे हैं अलाइनिंग एंड द पोजीशनिंग. तो हमने अलाइनिंग के बारे में भी पढ़ा एंड व्हाट अबाउट द पोजीशनिंग. So positioning is your actually positioning form elements involve placing them correctly on the page and the relative to each other to ensure usability and a clean layout. CSS provide multiple techniques for positioning form elements effectively. Okay, done. So इसके कुछ methods हैं भाई. Starting positioning means your default. मतलब कि default means जहाँ पे कुछ नहीं है default value ले लेगा अपने आप ही. So static positioning default अब ये क्या है इसके अंदर क्या है actually. ये words का actually कोई meaning है. term लिखी हुई उसका fully explained meaning है properly. Every HTML element is positioned normally in the document flow. No spatial positioning is applied. Okay. Relative positioning. Relative positioning is your all about the positions relative to its normal position. Got it? Use the top, right, bottom or left property to move it. Absolute भी होता है भाई. Element is a position relative to its nearest position. Ancestor, not the viewport. If no ancestor is a position, it aligns to the viewport. Fixed positioning, the element is positioned relative to the viewport. It does not move when scrolling the page. Okay. Sticky position means a position based on the scroll acts like a relative until a specific scroll point, then behave like a fixed, like वो static हो sticky हो गया है means वहाँ पे वो मतलब रुक गया है वो प्रॉपर से मूव नहीं होगा वो स्टिकी हो गया है. ओके सो नेक्स्ट हियर सिंटेक्स हम देख लिया एक्चुअली. सो द लास्ट वन इज अ रिस्पॉन्सिव फॉर्म डिजाइन. अभी रिस्पॉन्सिव फॉर्म डिजाइन क्या है. रिस्पॉन्सिव मीन्स लाइक योर मतलब कुछ लग रहा है कि मतलब एडजस्ट होने वाली चीजें. चलो हम देखते हैं बताती हूँ मैं आपको क्या है ये. ये मतलब responsive form design ensures that forms adjust and look great on different screen sizes and devices. Means जैसे कि हमारी कोई वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट ले लो, तो जैसे कि हमने उसे डेस्कटॉप पे ओपन किया, अच्छे से दिख रही है वो हमें कि प्रॉपरली कोई भी अजीब नहीं लग रहा, कोई वियर्ड थिंग नहीं लग रही है. दैट्स अ फाइन. When you see the website open in your mobile phone, that's also skip it. मतलब वो तब भी वो सही है. That's so responsive है. अगर फोन में अच्छे से ओपन हो रही है, then वो डेस्कटॉप पे अच्छे से ओपन नहीं हो रही है, so you can say that this website is not responsive. Responsive means वो कहीं पे भी adjust हो जाए. Means your डेस्कटॉप पे, मैप पे, टैबलेट्स पे, मोबाइल फोन्स पे, एनीवेयर.
So these are essential for creating user-friendly forms that enhance accessibility and usability across all the devices. Principle of it. Flexible layouts. Use percentage principle principle of responsive form. Flexible layouts. Use percentage based width, max width of Flexbox grid to create adaptive layouts. Mobile first approach. Design forms for smaller screen first and enhancement for larger screen using media queries. Scalable input field. Input field should resize or stack on smaller devices for better readability. Touch-friendly design क्या है? Ensures button and input have enough spacing for touch interaction. So टेक्निक क्या होती है? अब हर एक चीज की टेक्निक होती है जैसे कि हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे टेक्निक ऑफ द अलाइनिंग एंड द पोजीशनिंग सो इसकी भाई अब होगी टेक्निक अब देखते हैं टेक्निक क्या होती है लिसन केयरफुली सो फ्लेक्सिबल वेट एंड द flexible width with percentage or max width and maximum width. Set the form and the input field to scale based on the screen size. Media query. You can see media query को ऐसे ही represent करते हैं at the rate then media then next width you can choose your on what on choice. So media query means use a media query to adjust style for different screen sizes. मीडिया क्वेरी जहाँ पे आपने यूज किया है तो मीन्स आप मतलब कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में ट्राई कर रहे हो क्योंकि रिस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरी से ही बनती है तो ये चीज माइंड में सेट कर लेना कि मीडिया क्वेरी जब आप लिखोगे सो मीन्स इट इज फॉर रिस्पॉन्सिवनेस द फॉर्म मोबाइल फ्रेंडली सो यहाँ पे देखो हमने वन सेंटेंस में प्रॉपरली कंप्लीट कर दिया यूजिंग द CSS grid or Flexbox. Create flexible layouts that adjust automatically based on the screen size. सो अब क्या होगा भाई फोन साइज के लिए भी हो गया अब जैसे कि हमने वेबसाइट में जैसे कि डेस्कटॉप पे खोल कर भी वेबसाइट देन द font is so small then when you open the website on your phone same website on your phone then on your phone that then text is so large so this is a very weird thing right this is a very weird so that's why responsive font size is also important. Use the relative units like EM or REM for font to scale based on the devices. EM ये सब मैंने आपको previous lectures में properly fully explain बताया है. So don't panic about it. So move on. Adjustable button sizes. Ensures buttons are larger enough for touch interaction or smaller screens. Stacking form elements क्या होते हैं? On smaller screen form elements should stack vertically for better readability. So क्या हमने I have done the theoretical part of the today's lecture. So now we will start the coding part also because theory part is also important but coding is a very important. हाँ कोडिंग के लिए बेस बनाना पड़ता है और बेस किससे बनता है थ्योरी पार्ट जब आपको थ्योरी पता होगी देन यू कैन बिल्ड द लॉजिक so this is very also important so now explaining the responsive design responsive design actually हमने अभी पढ़ा फॉर्म अडेप्ट करता है to various screen sizes में providing a seamless user experience done and let's set the media to ensure our form look great on all devices like that you can see a media form width 100% then close it here form का ये then is so now let's start
the coding. Open your the VS Code. This is my VS Code screen. So here now create the file fastly. So just a minute. So here write the 13 code, not HTML now. Shift exclamation mark, then press the enter. टाइटल क्या है? स्टाइल लॉगिन फॉर्म। स्टाइल का मतलब कि हम यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड करेंगे आज। स्टाइल्ड स्टाइल्ड तो हमने स्टाइल लिख लिया है। अब हम ये सब बाद में लिखेंगे। फर्स्टली हम अपना एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। अगर हम HTML पार्ट लिखते हैं, स्ट्रक्चर बना रहे, देन यहाँ पे ना हम देखते रहते हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है, हर थोड़ा न्यू वे हमें साइड बाय साइड देखते रहना। सो हम एक फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं। एक्चुअली फॉर्म में एक्शन में क्या आएगा? एक्शन में अभी जस्ट लिव इट नाउ, first I am creating the normal form, then press the right here the heading H2 student login. Then now you can see जैसे कि मैं एक एक वर्ड एक एक लेटर मैंने लिखा, then you can see here यहाँ पे वो प्रॉपर्ली लेटर आपको शो हुआ होगा, शो हुआ एक्चुअली। then the div actually your the div container, div लिखा, then the present class form group. Now you can see इसमें ऐसे कुछ है नहीं, जो मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। टाइप है टेक्स्ट, यूजर नेम प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। यूजर नेम लिखते हैं, ये थोड़ा मुझे ठीक लगा। देन रिक्वायर्ड लिखना है मुझे, रिक्वायर्ड नीचे, हाँ हो गया। div यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। देन अगेन क्रिएट अ div, देन नाउ क्लास क्रिएट करनी है। फॉर्म ग्रुप हो गया। देन व्हाट शुड आई डू? लेबल, बस
हम्म, आईडी। ओके हो गया। देन द डिव हमारा क्लोज हो चुका है। देन नाउ क्रिएट अ बटन। टाइप क्या है हमारा, सबमिट ही होगा। नाउ फॉर बॉडी। ये हमारा HTML पार्ट देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम करेंगे स्टाइल। अब देखो कितना है सिंपल सा, इट्स वेरी सिंपल, नॉट सो impressive. So now we are creating this this login form impressive with the styling. So now, sorry, now we'll style the body. देखते रहना ध्यान से फॉर्म स्टाइल। नहीं है इसकी कोई सजेशंस नहीं है। हम सिर्फ डिस्प्ले क्या होगी। Next. आप यहाँ पे देखना साइड में चेंजेस, देखना किस तरह एक्चुअली ये चेंज हो रहा है। सी केयरफुली, देखो सेंटर में हो गया एक्चुअली। यहाँ पहले यहाँ था, देन ये यहाँ सेंटर हो चुका है। So here, what should I do? Align it. Android page. हैक्स लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम यहाँ पे ना देखो अभी यहाँ पे सजेशन आया, जैसे मैंने एक्वा लिया है, वेरी सिंपल एक्वा है मतलब। अब इसमें हम एक ना फिक्स है ये, अब इसमें RGB भी चेंज कर सकते हैं। हाँ हो गया ना यहाँ पे RGB ना, ओके। सो अब हम लेते हैं हेक्सा कलर। F2 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 ये वाला ले लेते हैं। ये जो वाइट सही है, यही ठीक है। मार्जिन लेंगे हम 0। सॉरी देखो बॉर्डर बन चुका है एक्चुअली।
बॉर्डर रेडियस क्या था अभी हमने पढ़ा था, ये कॉर्नर्स को राउंड करता है, राउंड दी कॉर्नर्स। हो गया देखो, बैकग्राउंड कलर CSS is a hint चाहिए। देखो वाइट हो रहा है, प्रॉपरली वाइट हो चुका है ये। अब हम CSS ऐड करेंगे इस पे डॉट फॉर्मूला। Yeah, then color is this display actually flex direction. Label. Margin bottom 5 pixel. Now you can see here. Okay. Now we are at the CSS on input. Input. So now adding padding. Padding is 10 pixel. Now you can see the changes very fast. So border 1 pixel, 1 pixel solid, border radius, font size, font size, font size हो गया, input focus, zero not zero actually O लेते हैं sorry 7 BF capital B FF Better आ गया so zero या refresh it. Okay. So here color here white white color is white, so fastly do it. Now border, simply border. So border देखो सुनो, border color हमने लिख लिया, देन कलर की तो नीड ही नहीं है। अब हम यहाँ लिखते हैं सिंपली आउटलाइन,
आउटलाइन क्या है? नन। इस पे वो नीचे आता है ना आउटलाइन, वो नन हो जाएगी, होगी ही नहीं। नॉट अवेलेबल येट। सो बटन, अब हम बटन को स्टाइल करते हैं। सो हेडिंग पैडिंग, बटन को हम ब्लू करते हैं। ब्लू, ओके। सो 10 पिक्सल। देखो बटन का साइज बड़ा हो गया। बैकग्राउंड कलर क्या ऐड करना चाहिए मुझे? ब्लू, हाँ। सो कलर करते हैं वाइट, जैसे कि टेक्स्ट विजिबल हो। विजिबल हो गया, हाँ। बॉर्डर करते हैं ना, जो ब्लैक ब्लैक बॉर्डर ना, एक्चुअली वो रिमूव हो जाएगा। हो गया, दैट्स फाइन। सो बॉर्डर रेडियस टू राउंड द कॉर्नर्स। None. Border radius, not a just a minute. Border Border radius क्या आएगा भाई? 5 पिक्सल ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। हाँ, 5 पिक्सल ठीक है। सो font size 16 पिक्सल। इसमें कर्सर क्या है? पॉइंटर रखो भाई। जैसे ही कर्सर पॉइंटर में से हम जब हम वहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे, देन पॉइंटर शो होगा। अब देखते हैं होवर करते हैं भैया। होवर इज वेरी इम्पोर्टेंट आल्सो। होवर, बैकग्राउंड कलर हैज एक्स एक्स 00 एक्स नेक्स्ट विड्थ 600 लेते हैं। You can also change it accordingly, not a fix जो मैंने ली वही आप लो। You can also choose your own favorite color. मुझे तो blue ही best लगा, so that's why I'm choosing this. So form में क्या width, इसको फॉर्म को एक्चुअली अच्छा सा करते हैं। 100%। Now completed format document. Then you can see the code. So ये आज हमने प्रॉपरली देखा साइड बाय साइड चल क्या रहा है यहाँ पे हमारे साथ। ये फॉर्म से कि ये देखो ब्लू आ गया, जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लू किया था एक्चुअली। ये इनपुट फोकस मतलब कि जो हम लिखेंगे इसके अंदर उस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि उसका कलर क्या होगा ओपन इन द ब्राउजर। देन नाउ यू कैन सी, हाँ बीच में हमें तो बढ़िया लगा है। दिस इज योर प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। सो क्या क्या आ रखा है ये, जस्ट क्रॉस इट। सो हियर नाम लिखता हूँ रेशमी। My name is Ree actually. 1 2 3 4 5 6 done. Login. मेरा फर्स्ट पेज है ना इसलिए। दिस इज अ फॉर्म विद स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग हमने इसमें कर दी है। तो ये फॉर्म अच्छा लग रहा है एक्चुअली मुझे तो बहुत ज्यादा।
Now is very excellent work today. So you have styled the form from scratch and made it responsive. In the next lecture, we will dive into integrating JavaScript for dynamic form behavior. So see you to later in the next lecture. Thank you.